let's start with chapter number 15, our planet Earth. Earth is the only planet where life is possible. So let's start with the chapter. The Earth is our home. It is round as orange. ये slightly flat होता है poles से, ठीक है? And 3/4 of the surface is covered with water. शेप की अगर हम बात करें वो रियली राउंड नहीं होता है, जियोइड शेप होती है इसकी. And people have sailed around the earth and they started from one place and kept on sailing and finally they come back to the same place. तो उन्हें लगा अर्थ क्या है, राउंड इन शेप है. But when a ship sail away from us, we notice that first the lower part of the ship disappear and then the middle part and finally top part disappear. So it can only happen on round surface. On a flat surface, the whole ship will go out of sight. कि अगर flat surface होगी तो पूरी एक साथ डूब गई. The people who have gone in space have taken photographs. The photograph shows that Earth is round in shape. ठीक है, अर्थ कैसा है, राउंड शेप. सो लेट्स स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट करता है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन क्या होता है, कंप्लीट डे में कंप्लीट करता है 24 आवर्स में. देयर आर चेंजेस इन डे एंड नाइट. इफ यू टॉक अबाउट रेवोल्यूशन, it completes in 364 1/4 days and you can say there is a changes in your season. So rotation, Earth spins like top of its axis, imaginary line, a center of the Earth, or spinning of the Earth on its axis is called rotation. ये spin करता है west to east और कितने घंटे में 24 आवर्स में. डे एंड नाइट चेंज होता है, मैंने आपको बताया. एंड द सन जो होता है वो साइन करता है ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस. एज द अर्थ रोटेट्स, लाइटेड पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द सन एंड हैज नाइट. और जैसे जो डार्क फेस करता है वहां पे नाइट होती है और जहाँ पे लाइट होती है सन की वहां पे डे होता है. Now next is you can take a globe and a torch and you can see. Then revolution. The earth moves in two ways and spin on its axis same way it goes around the sun. और जो movement होती है अर्थ की around the sun, देखो अर्थ क्या कर रहा है, सन के आसपास घूम रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, रेवोल्यूशन. Time taken to complete one revolution is 1 year 365 1/2 days and it causes season. Basically we have 5 season: spring, autumn, winter, monsoon and summer season. Sun, the huge ball of fire, star nearest to the earth, ठीक है, ये main source of heat and light है. Then we have moon, it is a natural satellite of the earth, right? It revolves around the earth once in 27.3 days. It has no light. ये किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, आपके सन की. Phases, moon is our nearest neighbor in space. Every night it appears to change its shape. आप देखेंगे कि हर नाइट पे जो शेप होते हैं मून की वो आपको अलग दिखाई देती है. कहीं पे आपको फुल मून दिखेगा, कहीं पे न्यू मून, गिब्बस मून, ठीक है, हाफ मून, क्रीसेंट मून. दीज आर द डिफरेंट मून. समटाइम्स नॉट वी सी द टॉप फेस, जब उसको न्यू मून कहा जाता है, जैसे अमावस्या. आफ्टर न्यू मून कम्स क्रीसेंट मून, जो आपको खाली कुछ ही पार्ट दिखाई देता है, बहुत घेवर, ठीक है. और आफ्टर फोर्टनाइट यू सी दैट होल ऑफ द लिट अप फेस ऑफ द मून. इसको हम फुल मून कहते हैं, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं. कॉन्स्टलेशन, सम ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म पैटर्न इन द स्काई. दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. ठीक है, ये ह्यूमन फिगर्स में शो करते हैं. हमारे 88 नोन है: उर्सा मेजर, माइनर, ग्रेट वियट, ओरियन, स्कॉर्पियन, ली. राइट, दीज आर द डिफरेंट constellation, those who form the different shapes. If you look at in the north direction, you might see a bright star. और star को क्या कहा जाता है, pole star. What we call it, pole star. Right? This is all about in this chapter. Let's move to the exercise now. Now, pick the correct option. The earth is our home. The earth completes its one rotation in how many hours? 24 hours. The earth is dash billion year old, 4.56. The sun is a huge ball of fire. Moon is dash like earth, round like a. The dash part of the earth is covered with water. 3/4. The spinning of the earth on its axis is called rotation. The movement of the earth around the sun is called revolutions. The moon is a natural dash of the earth, natural satellite.
Group of stars in the sky is called constellation. Now you have to define the sun, thus the sun is a hot ball of fire. ऐसा लिख सकते हैं. It is a hot ball fire. Right? Moon, the natural satellite of the earth. Okay, what it is? It is the natural satellite of the earth. What is new moon? It is not visible. Constellation, group of stars forming figures. Right? Now write T for true and F for false statement. The earth gets its lights from the moon. False. Moon के पास तो खुद अपनी light नहीं होती. If sailor keeps on sailing in same direction, they will reach the same point. It's true. Photographs of the earth from space shows that the earth is round. It's true. The earth rotates on sun's axis. On its axis. The revolution of the earth causes season. It's true. Now answer the following question. How it is proved that earth is round in shape? कैसे हम prove कर सकते हैं कि earth round in shape है? मैंने आपको 3 चीजें बताई थी. Any 3 points you can write from there. Give 2 proofs. From there only you can write 2. What is rotation? When a earth move on its axis and takes 24 hours. What is revolution and what is meant by phases of E? Right? This is all about in this chapter. Hope you understood each and everything. Now let's meet in next class. That's all for today. Thank you.